डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का चैप्टर जो हम स्टडी कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। इस चैप्टर का जो हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो टॉपिक है हमारा आज मॉडर्न पीरियडिक टेबल, और वी कैन से एंड द मॉडर्न पीरियडिक लॉ। मॉडर्न पीरियडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियडिक लॉ। इससे पहले, मॉडर्न पीरियडिक टेबल से पहले एक और पीरियडिक टेबल हमने एक टॉपिक जो पढ़ा था, दैट वाज मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल जिसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई, मेंडलीव ने जो पीरियडिक टेबल दिया था इन 1871 में, उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बट जिसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बुनियाद पर क्लासिफाई कर दिया इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड different columns of the periodic table on the basis of the atomic mass, he states that the atoms, he states that the properties of the elements are the properties of the elements are the periodic functions. The properties of the elements are the periodic functions of their atomic weights. But this periodic law was first time given by the Mendeleev, and that periodic table this periodic law has been now modified by the Henry Moseley in 1913, and he gave his own periodic law, and that periodic law, according to him, he said that the atomic number is more fundamental property of the elements than its atomic masses. According to Moseley, the atomic number is more fundamental property of the elements than the atomic masses. According to him, that the elements must be classified into the different groups and the periods of the periodic table on the basis of their atomic numbers. So he modified the Mendeleev's periodic law, and so this periodic law is also known as the modified form of the Mendeleev's periodic law. According to this law, the law states that the properties of the elements, physical as well as the chemical properties, are the periodic functions of their atomic numbers. According to the Moseley, who gave his periodic law in 1930, and this periodic law, I can repeat this. The law states that the properties of the elements, physical or the chemical properties, are the periodic functions of their atomic numbers. We know that, as you know from your 9th class, that the atomic number, जो एटॉमिक नंबर होता है, एंड आप किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब ये हुआ कि जो प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस में होता है एटम्स के, जो डिपेंड करते हैं इसके न्यूक्लियर चार्जेस पर, क्योंकि एटम की जो न्यूक्लियर चार्ज होती है वो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एटम, और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स ऑफ द एटम। वो किसी एटम में, डियर स्टूडेंट्स, किसी एटम में जितना भी एटॉमिक नंबर इसका हो, इसमें इतने ही प्रोटॉन्स होते हैं और इसमें इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एज यू नो फ्रॉम योर बिगिनिंग क्लास, फ्रॉम योर क्लास 9th, that the protons are always present in the nucleus, and electrons are always present in the different shells of the atom of an element. Thus, the periodic table, based on the modern periodic law, which the Moseley have given in 1930, I can repeat that the periodic table based on the modern periodic law is known as the modern periodic law, and the table formed on this law has been named as the modern periodic table, or the long form of the periodic table, or the modified form of the Mendeleev's periodic table, because the Mendeleev's Mendeleev ने जो periodic law दिया था on the basis of the atomic masses, उस periodicity को, periodic law को periodicity भी बोलते हैं, इस periodic law और इस periodicity को मोस्टली ने मॉडिफाई कर दिया है और एटम्स को अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर्स का मकसद ये हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
Now it is then easy to classify the elements on the basis of the electronic configurations, which determines the physical and the chemical properties of the elements according to the modern periodic table. And we say that in this periodic table, the elements were arranged in the order of their increasing atomic numbers, in such a way that the elements with a similar property, that means the elements with a similar trend, or the periodicity, fall in the same vertical column, which is at the group, and the horizontal row, which they called as the period. Vertical columns are called the groups, and the horizontal rows are called the periods. That means elements have been arranged in the order of their increasing atomic numbers into the different groups and the periods. Groups which we call the vertical columns, and the periods which we call the horizontal rows of the periodic table, on the basis of the atomic numbers, or we can say on the basis of the number of electrons in the neutral atom. In this table, the elements having the similar outer electronic configuration, because we know that atomic number, जिस एटम में जितना भी एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है, उतने ही उसमें क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उतने ही इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि दैट in this table the element is having the similar outer electronic configuration. That means, in other words, we can say the element is classified into the different groups, and the periods of the modern periodic table have been classified on the basis of the outer electronic configuration, because the number of atoms present in the atomic number of the atom is equal to the number of electrons present in that atom of an element. Thus, we can say that the elements having the similar outer electronic configuration are arranged in the same vertical column, which is vertical columns, which are called the groups. For example, I can quote you here one example. For example, group first, we can take group first elements. हम group first elements के example लेंगे. Like group first में आप देखते हैं अपनी periodic table पर, अपनी किताब पर भी हमारा periodic table दिया गया है पहले ही पेज पर. Like हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिलियम है, सेंसियम है और फ्रांसियम है. इनका जो एटॉमिक नंबर है, इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है, मैंने इधर लिखा है कि हाइड्रोजन का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है इसकी 1s1, लिथियम की है 2s1, सोडियम की है 3s1, पोटेशियम की है 4s1, रुबिलियम की है 5s1, एटसेट्रा, जो इसके दूसरे एलिमेंट. इसका मतलब है कि इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या बनती है, ns1. दैट मीन्स दीज एलिमेंट्स विद अ similar outer electronic configuration have been put into the same group of the periodic table. On the other hand, the elements having the increasing number of electrons, they have also been put into the same with the same outer electronic configuration. They have been put in the same groups or the periods of the periodic table. On the other hand, the elements having increasing number of electrons in their outermost shells, जिसको हम outer electronic configuration भी बोलते हैं, have been put into the same horizontal row, which we call it as the periods. For example, हम इसकी भी एक और एग्जांपल देंगे. पीरियड नंबर फर्स्ट हम लेंगे अपनी पीरियडिक टेबल पर. अपनी किताब पर जो पीरियडिक टेबल दिया गया आप वो देख सकते हैं. उसमें है हाइड्रोजन है, हीलियम है. इसमें ग्रुप फर्स्ट में, पीरियड फर्स्ट में सिर्फ 2 एलिमेंट्स आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम. हाइड्रोजन का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन दैट इज 1s1, और हीलियम की है 1s2, or have the same outer electronic configuration as, or they belong to the same outer configuration. That means that is 1s1. 1s have the same electronic configuration as 1s1. And इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका पहला एलिमेंट है, इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पहले शेल में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आता है, और हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन आती हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स. इसी तरह पीरियड सेकंड में हमारे हैं लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और फ्लोरीन है और नियॉन है. जिस तरह हम देखते हैं अपनी पीरियड टेबल के, लिथियम की जो आउटर इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है, इसमें कम इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें सिर्फ 3 है, और 2s1 है इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन. बेरिलियम की है 2s2, इसमें है 2
2s3 और इसी तरह रेस्पेक्टिवली इनके एम्प्टी आउटर इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन इंक्रीज है. गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी कैन से द ग्रुप, इनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन इंक्रीज होती है, और फ्रॉम डाउन द पीरियड और एंड डाउन द ग्रुप, जो पीरियड टेबल में जिसको हम ग्रुप बोलते हैं, फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, इसकी आउटर इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन और दे हैव बीन पुट इन द सेम ग्रुप ऑन द बेस ऑफ द सिमिलर इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन. And they have been, and in case of the periods, they have been put into the same periods on the base of increasing outer electronic configuration. And that is lot for today, I think. And next will be the tomorrow. Now I can repeat this once again, that the elements have been put into the different groups of the modern periodic table on the base of their, and the groups and the periods of the periodic table on the base of their increasing on the basis of their similar outer electronic configuration. ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं, इनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन है, दे हैव द सेम आउटर इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन ऑन द बेस, दे हैव बीन पुट इन द सिमिलर ग्रुप्स ऑन द बेस ऑफ द सेम आउटर इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन. इसका मतलब ये हुआ कि जिन एलिमेंट्स की आउटर इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन सेम है, जस्ट लाइक लिथियम सोडियम पोटेशियम ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, इनके आउटर इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन सेम है, दैट इज 1s1. हर एक एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 है, इसलिए इनको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है. इसी तरह जिसकी आउटर इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन 2 है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और इसको सेकंड ग्रुप में रखा गया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड इसी तरह पीरियड्स जो एलिमेंट्स है, पीरियड्स में एलिमेंट्स हैव बीन elements with the increasing number of electrons in the outermost electronic configuration have been put into the same horizontal rows of the periods of the periodic table. Just like period, I can quote here the period first. इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट आते हैं, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम आता है. हाइड्रोजन की जो आउटर इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन दैट इज 1s1 और हीलियम की है 1s2, एंड देयर आउटर इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन becomes 1s. Their outer electron configuration becomes 1s. और इसी तरह दूसरे पीरियड की जो आउटर इलेक्ट्रॉन configuration, जिसमें हाइड्रोजन आता है, जिसमें लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरान आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन आता है, और इनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉन configuration है, that is 2s and 2p. On the basis of these outer electron configuration, elements have been classified. And the most important, the most popular vision of this modern periodic table is its long form. That means all the elements. That means elements have been put into the different groups and the periods of the periodic table. Into different groups and the periods of the periodic table. According to IUPAC system, the groups are numbered from 1 to 18, and the groups are numbered from 1 to 18. That means there are altogether 18 groups, and the periods are numbered from 1 to 7, and there are altogether 7 periods of the periodic table. And we will discuss these groups and periods separately, one by one in the next chapter. Till then, Khuda Hafiz.